Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to our application AIMS tutorial. In this video, we'll be discussing Unit 3, Chapter 3, Accounting for Not-for-Profit Organizations, page number 126, question number 4. Kamareddy Youth Club gives you their receipts and payments account and other information and requests you to prepare their income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. तो यहाँ पे कामारेड्डी यूथ क्लब वालों का प्रॉब्लम है और वो लोगों का रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑलरेडी बना हुआ है प्रोवाइडेड विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इस बार अपने को रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना नहीं है, ऑलरेडी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना हुआ है. अब अपने को ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. ये प्रॉब्लम किसका है? कामारेड्डी यूथ क्लब वालों का है. और ये लोगों का ईयर एंडेड कब हो रहा? इट इज एंडिंग ऑन 31st मार्च 2019. 31st मार्च 2019 में खत्म हो रहा. तो स्टार्ट कब हुआ था? ये 2019 में अगर ये खत्म हो रहा तो शुरू कब हुआ था? ये 2018 में. सो करंट ईयर क्या है ये प्रॉब्लम का? 2018 2019 इज करंट ईयर. दिस विल बी कंसिडर्ड एज करंट ईयर. So before starting income and expenditure account, let us recollect the 3 points for receipts and payments account. Receipts and payments account starts with opening balance to balance brought down and ends on closing balance by balance carried down. Receipts and payments का पहला पॉइंट क्या था? ओपनिंग बैलेंस पे शुरू होता, क्लोजिंग बैलेंस पे खत्म होता. दूसरा पॉइंट क्या था? एनी अमाउंट कैन बी रिकॉर्डेड एज रिसीप्ट्स और पेमेंट्स if it is related to current year or it is related to previous year or it is related to next year. Receipts and payments account का दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी अमाउंट चाहे वो रिसिप्ट में लिखना रहो या पेमेंट में लिखना रहो, ये साल का रहा, करंट ईयर का रहा तो भी लिख सकते, गुज़िश्ता साल का रहा, प्रीवियस ईयर का रहा तो भी लिख सकते, आने वाले साल का रहा, नेक्स्ट ईयर का रहा तो भी लिख सकते. तीसरा पॉइंट ये था, एनी आइटम कैन बी रिकॉर्डेड एज रिसिप्ट्स और पेमेंट्स इफ इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर और ऑफ कैपिटल नेचर. तीसरा पॉइंट ये था कि कोई भी अमाउंट वो रिसिप्ट में भी लिख सकते या पेमेंट में भी लिख सकते, चाहे उसका नेचर रेवेन्यू नेचर का रहने दो या फिर कैपिटल नेचर का रहने दो. व्हाट इज रेवेन्यू नेचर? which repeats. What is capital nature? which does not repeat. मतलब जो चीज हमेशा होते रहती वो रेवेन्यू नेचर है, जो चीज कभी कभार होती वो कैपिटल नेचर है. सो द 3 points for receipts and payments account are: it starts at opening balance, ends at closing balance, previous year, current year, next year, all amounts can be recorded, and revenue nature item can also be recorded, capital nature item can also be recorded. These 3 were the points for receipts and payments account. So now while preparing income and expenditure account, these 3 points will be reversed. तो सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाएंगे उसके लिए हेडिंग और फॉर्मेट चेक कर लेंगे. द हेडिंग विल बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ कामारेड्डी यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 and the format will be expenditure amount rupees, income amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit. हेडिंग में जो नाम आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा, बट फॉर्मेट में एक्सपेंडिचर पहले आएगा, इनकम बाद में आएगा. एक्सपेंडिचर विल बी रिकॉर्डेड फर्स्ट इन फॉर्मेट, देन इनकम विल बी रिकॉर्डेड लेटर. While letting the name income and expenditure will be recorded, while drawing the format expenditure will be recorded first, then income will be recorded. So whatever is given as receipts in the question, almost all the items will be converted as income except few. तो जो भी क्वेश्चन में अपने को रिसिप्ट में दिया हुआ है वो अपने को सोल्यूशन में क्या होगा? इनकम में कन्वर्ट होगा. मतलब क्वेश्चन में जो चीज 2 में दी हुई है वो सॉल्यूशन में इनकम में बाय में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड व्हाटएवर हैज बीन गिवन एज पेमेंट्स, क्रेडिट में जो दिया हुआ है, जो चीज बाय में दिया हुआ है वो सॉल्यूशन में एक्सपेंडिचर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा. व्हाट वर द 3 points for receipts and payments account? It starts with opening balance, ends at closing balance. This is a point for receipts and payments account. But the point for income and expenditure account is that we neither record opening balance nor we record closing balance. तो receipts and payments account बनाते वक्त opening balance भी लिखते, closing balance भी लिखते, but while preparing income and expenditure account we neither record opening balance nor we record closing balance. तो solution में हम ना opening balance बताएंगे ना closing balance बताएंगे. हम क्या पढ़े थे? जो रिसिप्ट है वो सोल्यूशन में किसमें कन्वर्ट होगा? इट विल बी कन्वर्टेड एज इनकम. बट हम इनकम में बताते वक्त ओपनिंग बैलेंस नहीं बताएंगे ना क्लोजिंग बैलेंस बताएंगे. सो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों लिखते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों भी नहीं लिखते. नेक्स्ट वी हैव सब्सक्रिप्शन. सो हियर वी हैव सम एडजस्टमेंट्स. What is the additional information provided in the question? Outstanding subscriptions as on 31st March 2019 1500. Subscriptions received in advance on 31st March 2019 500.
वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर सोल्ड इज 45,000. तो दो एडजस्टमेंट्स अपने को सब्सक्रिप्शंस पे दिए हुए हैं और एक एडजस्टमेंट अपने को वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड पे दिया हुआ है. फर्स्ट टू एडजस्टमेंट्स आर गिवन ऑन सब्सक्रिप्शंस. नेक्स्ट वी हैव एन एडजस्टमेंट ऑन वैल्यू ऑफ फर्नीचर sold. Next, after opening balance, as we do not record opening balance in income and expenditure account, then we have subscription 70,000. So whatever is received in the question, it will be converted as income in the solution. So ये जो two subscription 70,000 है, this will be recorded on income side as by subscription 70,000 rupees. By subscriptions 70,000. On this we have two adjustments. One is outstanding subscriptions as on 31st March 2019 1500. So outstanding subscriptions will be added to it. Plus outstanding 1500. So 70,000 plus 1500, it becomes 71,500. Next, we have subscriptions received in advance on 31st March 2019 500. Subscriptions received in advance का मतलब क्या? आने वाले साल का पैसा advance में ले लिए हम. So while preparing receipts and payments account, there was a point that any amount can be recorded, whether it is related to previous year or it is related to current year or it is related to next year. But the second point while preparing income and expenditure account is that only items of current year should be recorded and any amount related to previous year should be subtracted or related to next year should be subtracted. Receipts and payments account बनाए वक्त last year, current year, next year सब amount लिखते थे. But income and expenditure account बनाए वक्त सिर्फ current year के items लिखना, कोई भी amount previous year से related रहा minus करना, next year से related रहा minus करना. So here subscriptions received in advance का मतलब क्या? आने वाले साल के पैसे advance में ले लिए हम. So this should be subtracted. So this will be subtracted as less received in advance 500. So 71,500 minus 500, it becomes 71,000. Then after subscriptions, we have donations received for mineral water 80,000. So here the organization Kamareddy Youth Club, they are receiving donations rupees 80,000 rupees for mineral water. Donations will be of two types. One is general donation and another one is specific donation. What do we mean by general donation? If the donor of the amount is not specifying any purpose for which the amount should be utilized, then it is a general donation. पैसे डोनेट करने वाले अगर कुछ पर्पस स्पेसिफाई नहीं करके पैसे डोनेट कर रहे हैं, हम उसको जनरल डोनेशन बोलेंगे. अगर पैसे देने वाले डोनेशन का अमाउंट देते वक्त कुछ पर्पस स्पेसिफाई कर रहे कि ये पैसा कहाँ पे यूज करना, then it will be a specific donation. So here the donations are received worth rupees 80,000, but the purpose is also specified that it should be used for mineral water. So this is a specific donation, and while preparing income and expenditure account, we do not record specific donations. तो उसके लिए एक नोट लिखेंगे, donations received are of specific nature, hence it cannot be recorded as income in income and expenditure account. अगर डोनेशन जनरल रहता तो हम रिकॉर्ड करते थे, but as it is a specific donation, it cannot be recorded in income and expenditure account. Next we have sale of old furniture 42,000. रिसीट्स एंड पेमेंट्स का तीसरा पॉइंट क्या था? रेवेन्यू नेचर का आइटम हमेशा होने वाली चीज भी लिख सकते, कैपिटल नेचर का आइटम कभी कभार होने वाली चीज भी लिख सकते. इनकम एंड एक्सपेंडिचर का तीसरा पॉइंट क्या है? हमेशा होने वाली चीज रेवेन्यू नेचर लिखना, कभी कभार होने वाली चीज कैपिटल नेचर नहीं लिखना. So the 3 points for income and expenditure and 3 points for receipts and payments. The 3 points for receipts and payments and the 3 points for income and expenditure are as follows. While preparing receipts and payments account, we write opening balance as well as closing balance. But while preparing income and expenditure account, we neither write opening balance nor we write closing balance. The second point for receipts and payments account is any amount be related to previous year or current year or next year can be recorded. Whereas the second point for income and expenditure account is that only amounts of current year should be recorded. Any amount related to previous year should be subtracted. Any amount related to next year should also be subtracted, and only current year outstanding amount should be added. The third point for receipts and payments account is revenue nature items can also be recorded. Capital nature items can also be recorded. Whereas the third point for income and expenditure account is only revenue items can be recorded. Capital items should not be recorded. Capital nature items should not be recorded. What do we mean by revenue nature items? Which are of recurring in nature, जो चीज repeat होती. What do we mean by capital nature items? जो चीज repeat नहीं होती. So here sale of old furniture 42,000 is given. तो furniture हम सिर्फ एक बार बेचते हैं, तो ये capital nature का है, इसको record नहीं करना. But we have adjustment on this. Adjustment क्या है? The value of furniture sold is 45,000. मतलब आप जो फर्नीचर बेच रहे हैं वो 42,000 में बेच रहे हैं, जबकि वो है कितने का? 45,000 का है. So 45,000 का फर्नीचर 42,000 में बेच रहे हैं, तो अपने को नुकसान हो रहा. कितने का नुकसान हो रहा? 3,000 का नुकसान हो रहा. So this will be shown on expenditure side as
टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 45,000 का फर्नीचर था, हम 42,000 में बेच रहे, तो अपने को नुकसान कितना हो रहा, 3,000 का लॉस हो रहा. सो दिस विल बी शोन एज टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000 ऑन एक्सपेंडिचर साइड. देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 10,200. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, तो ये हमेशा आने वाला अमाउंट है. दिस कैन बी शोन एज income, so this will be recorded on income side as by interest on investments 10,200. Now we have completed all the items which were given on receipt side. Now let us have a look of items which are given as payment side. Payment here it is given as by salaries 20,000. तो salaries हम कितने बार बनते, हर महीना पे करते, so it is of revenue nature, it can be recorded, so this will be shown as expenditure to salaries. तो यहाँ बताएंगे आप to salaries 20,000. Then after salaries we have fixed deposits 1 लाख रुपीज. फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या, हम बैंक में अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट करके रख दिए. ये चीज कितने बार करते हैं आप, सिर्फ एक बार करते हैं. सो दिस इज ऑफ कैपिटल नेचर. सो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते वक्त कैपिटल नेचर का आइटम लिख सकते, बट वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक ही बार होने वाली चीज रिकॉर्ड नहीं करना, कैपिटल नेचर की आइटम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. सो फिक्स डिपॉजिट विल नॉट बी शोन एज एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर भी हम एक ही बार खरीदते, इवन दिस इज ऑफ कैपिटल नेचर, सो दिस कैन नॉट बी शोन एज एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट वी हैव परचेज ऑफ शेयर, शेयर भी कंपनी में हम सिर्फ एक ही बार खरीदते, इवन दिस इज ऑफ कैपिटल नेचर, हेंस दिस कैन नॉट बी शोन एज एक्सपेंडिचर. तो अब इन तीनों के लिए हम क्या करेंगे, नोट लिखेंगे. फिक्स डिपॉजिट्स, परचेज ऑफ फर्नीचर एंड परचेज ऑफ शेयर्स और ऑफ कैपिटल नेचर एंड आर हेंस नॉट रिकॉर्डेड एज एक्सपेंडिचर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते तब तीनों भी लिखते थे, क्योंकि वहां का पॉइंट क्या है, रेवेन्यू नेचर का आइटम है तो भी लिख सकते, कैपिटल नेचर का आइटम है तो भी लिख सकते. बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पॉइंट क्या है, ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर शुड बी रिकॉर्डेड एंड आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर शुड नॉट बी रिकॉर्डेड. तो फिक्स डिपॉजिट एक ही बार करते इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहे, परचेज ऑफ फर्नीचर एक ही बार खरीदते इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहे, परचेज ऑफ शेयर एक ही बार खरीदते इसीलिए इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे. देन वी हैव प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 20,000 रुपीज. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये बार बार होने वाला काम है, इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, सो दिस कैन बी शोन एज एक्सपेंडिचर. तो इसको बताएंगे हम टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 20,000. देन वी हैव जनरल एक्सपेंसेस 6,000. जनरल एक्सपेंसेस आर आल्सो ऑफ रेवेन्यू नेचर, ये हमेशा होने वाले खर्चे रहते, this can be shown as expenditure, so this will be shown here as to general expenses 6,000 rupees. Then we have by balance carried down 24,000. this is considered as closing balance. तो क्लोजिंग बैलेंस हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में बताते हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्लोजिंग बैलेंस भी रिकॉर्ड नहीं करते. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द आइटम्स व्हिच वर गिवन एज रिसीप्ट्स एज वेल एज payments. Also we have completed all the additional information which was given as additional information. Now we will be balancing the income and expenditure account and we'll be finding whether we are earning surplus, we are earning profit or loss, that is we are in surplus or we are having an amount which is of deficit. So how do we calculate the amount? So first here we have the total expenditure and here we have total income. Here we have expenditure side and here we have income side. So first we'll be doing the total of expenditure. 20 plus 20, 40, 40 plus 6, 46 plus 3, 49,000. So total expenditure is 49,000. So here we'll be writing it as 49,000. Followed by the total of income. 70 plus 10, 80, 80 plus 1, 81, 81 plus 200, 81,200. 81,200. So total expenditure is 49,000 whereas total income is 81,200. तो इन दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है, 81,200 ज्यादा है. So on both the sides we'll be writing the total as 81,200. 81,200. So on income side we have recorded the total as 81,200 and if we count we have the total as 81,200. But on expenditure side we have recorded the total as 81,200 but if we count we have the total only as 49,000. Now subtracting 49,000 from 81,200. 49 then 1 it is 50, 50 plus 30 80, 30 plus 1 31, 31 plus 1 32, 32,200. subtracting इसको subtract करके देखेंगे 81,200 और 49 subtract करना है. 89,200 में से 49 subtract करना है. So 200 minus 0 it will be 11. 11 minus 9 here it will be 200 minus 0 it will be 200. 10 plus 1 11 minus 9 again it will be 2. So here 7 minus 4 it will be 3. तो अपने को जो पैसे बच रहे वो कितने बच रहे, 32,200 बच रहे. That will be recorded here as to surplus 32,200.
हम यहाँ पे सरप्लस क्यों बोल रहे हैं? अपनी आमदनी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर खर्चा कम है। अपना टोटल इनकम कितना है? इट इज 81,200। अपना टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 49,000। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट total expenditure of 49,000 from total income of 81,200, still we are left out with an amount of 32,200, which will be regarded as surplus, and here it will be recorded as to surplus 32,200, and in brackets we'll be writing it as excess of income over expenditure. तब ये लिखना कैसा? टू सरप्लस के बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? एक्सेस ऑफ। ये कौन सा साइड है? एक्सपेंडिचर का साइड है, तो पहला नाम किसका आना? इनकम का आना। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसका मतलब भी यही है कि अपनी आमदनी ज्यादा है, खर्चा कम है। इट ऑल्सो मीन्स दैट our income is more and our expenditure is less. So when our income is more and our expenditure is less, then we'll be having a surplus amount, which is recorded here as to surplus, and in brackets we'll be writing it as excess of income over expenditure. I repeat, the 3 points for receipts and payments will be exactly opposite for income and expenditure. There the first point was opening balance, closing balance दोनों लिखते for receipts and payments account, while for income and expenditure account we neither record opening balance nor we record closing balance. For receipts and payments account, the second point was previous year, current year, next year, all the amounts can be recorded, whereas for income and expenditure account only amounts of previous year and next year will be subtracted, and only amount of current year will be recorded, and current year outstanding will be added. Third point for receipts and payments account was revenue nature items will also be recorded, capital nature items will also be recorded, whereas the third point for income and expenditure account is only revenue nature items will be recorded and capital nature items will not be recorded. Hope you have understood the topic. See you all in next video. Thank you.